Hello students, today we will discuss about explanations of the way of the world. From hence let those be born who mean to wed, lest mutual falsehood stand the bridal wed. For each deceiver to this cost may find that marriage frauds too oft are paid in kind. इसका कॉन्टेक्स्ट है दीज आर द क्लोजिंग कमेंट्स इन द वे ऑफ द वर्ल्ड एंड हर्ज Congreve seems to be imparting a valuable lesson to the pupil in general. The mischief of Fainall has brought him nothing but a public insult, because marriage for him was a means of getting money. The lust of Lady Wishford has been made the object of public ridicule, and the lovers Mirabell and Millamant have been united in marriage. The play thus ends in a comic and pleasing atmosphere. इसकी explanation है Through Mirabell, Congreve tells that fraud and chatting always end in trouble and insult. Lady Wishford feels relieved when Mirabell comes forward and destroys the intrigue of Fainall. He returns all the papers of property to Mrs. Fainall, who is the real claimant of that wealth. Now Mirabell advised that the happiest that is that this husband and wife must develop mutual faith. They should never dream of deceiving each other or having extramarital relations. If one of them adopts the wrong way, the other is also bound to do the same. So the married people should carefully keep themselves away from falsehood. In that case, their matrimonial relationship will be completely destroyed and their life would be troublesome, and they will have to pay heavily for it. They must remember that if the husband is false, the wife will also be false to him, and so their relations are bound to be poisoned. These lines are just like a moral teaching, but in fact that reveal the spirit of the play. The dramatist wants to create the impression that mutual faith is very necessary for happy married life, and all that was happening in the fashionable circles was quite wrong, because it was damaging the roots of a strong family and social setup. ये इस नाटक की अंतिम पंक्तियां हैं और नाटक का लोगों को महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। फैनॉल को बदमाशी से अपमान के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वह विवाह को धन का साधन मानता था। लेडी की वासना उसके उपहास का कारण बनती है। मिराबेल व मिलामेंट का विवाह हो जाता है और नाटक आनंद में समाप्त हो जाता है। लेखक बता धोखाधड़ी सदैव अपमान व परेशानी लाती है। लेडी को बहुत शांति मिलती है जब मिराबेल आगे आकर फैनॉल के षड्यंत्र को विफल कर देती है। वह श्रीमती फैनॉल की सभी संपत्ति उसे वापस कर देता है। वह कहता है कि सबसे आनंददायक ये है कि पति पत्नी में आपसी विश्वास हो और उन्हें एक दूसरे को धोखा व विवाहित संबंधों के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। यदि उनमें से कोई गलत मार्ग पर जाता है तो दूसरा भी निश्चित वैसा ही करेगा। उन्हें झूठ से दूर रहना चाहिए, अन्यथा वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाएगा और दोनों को उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इन पंक्तियों में नैतिक शिक्षा है। लेखक उन चीज़ों को दूर करना चाहता है जो जीवन को नष्ट कर देती है। Here Millamant talks about love and lovers. According to her, the greatness and charm of love increase as much as one asks for it from his beloved, though it may happen in everyday life of man. She believes that a true lover should always depend upon the mercy and kindness of the beloved and should not separate himself from her even for a moment. If he considers in love, he is certainly miserable, because the feeling of satisfaction in the eyes of lover is the symbol that love is coming to an end. There is nothing so imbued
impudent in nature as the impertinent look of a man who is confident of his success in love. She compares the condition of husband and lover and tells that the husband has self-assurance that his love has been completed after marriage, but a lover is self-confident. The ideas of a husband are not true but self-deceptions. At last she comes to explain her real intention, that she will not be ready to marry him unless she is sure that she will enjoy her own life and shall be free to live as she pleases. She will marry only when she feels pleasure in it and not before. The wit of Millamant is quite clear in this dialogue. In the Restoration Society, marriage and love were two different things, and man and woman had their own conditions and considerations about them. This is a very famous scene when Mirabel and Millamant put their conditions before each other, and that they will marry only if these conditions are settled. This shows that for them marriage is a contract and a settlement, and they consider marriage as bondage and loss of their pleasure and freedom. Millamant, the heroine of The Way of the World, is counted among the immortal character of the Congreve, and according to Hazlitt, Millamant is the ideal heroine of the comedy of high life. She dominates the play by her brilliant and department. Okay. Though they cannot tell any similarity between the two, still they show who reflects whom. These confusing comments and ill manners reveal that someone has undergone dispute and he has been made ridiculous in the society. He is the only fool who presumes himself reflected in a play. If someone is so proud who thinks that he can make a scene successful all alone, he is a fool, because a wise man knows that satire hates such a degradation which completes only one aim, because just as a painter makes a beautiful face, still its beauty is in different parts and he mixes all of them in one portrait. No single woman can claim to be the symbol of all his beauty. In the same way, poets also present fools, bukes and beautiful groups together in a single composition. यद्यपि वे इन दोनों में पूर्ण समानता नहीं बता पाते, फिर भी ये दिखाते हैं कि कौन पात्र किस व्यक्ति को प्रतिबिंबित करता है। ये भ्रामक टिप्पणी व दुर्भावना से ऐसे दिखाते हैं कि किसी की मानहानि हुई हो और समाज में हंसी का पात्र बनाया गया हो। वह मूर्ख व्यक्ति है जो अपने को किसी नाटक में प्रस्तुत किया मानता है। यदि कोई इतना अहंकारी है जो ये सोचे कि वह अकेला ही सही इस दृश्य को कायम रख सकता है, तो वह मूर्ख है, क्योंकि विद्वान व जानकर व्यक्ति जानता है कि व्यंग्य इतना नीचे गिरने से घृणा करता है जो केवल एक ही उद्देश्य को पूरा करे। क्योंकि जैसे चित्रकार अति सौंदर्य का चेहरा बनाते हैं, फिर भी उनका सौंदर्य अलग अलग होता है और इन सब सौंदर्य को एक ही चित्र में मिश्रित करता है। कोई स्त्री समस्त सुंदरता के प्रतीक होने का दावा नहीं कर सकती। इसी प्रकार का अभिप्राय एक ही रचना में मूर्ख, छैला व सुंदर समूह को एक साथ प्रस्तुत करते हैं। ओके, आफ्टर दिस प्ले हैज बीन परफॉर्म्ड, all the pupil will be depressed and I think that will afterwards criticize it badly, but before considering this play a failure, please presume how difficult it is to please everybody. Some critics are so ill-natured that they are determined never to please in any way, and certainly that dramatist must possess extraordinary talent who please the pupil against his own will. So certainly inferior poets are our enemies, and we very well know
हाउ देयर नंबर इज इंक्रीजिंग इन द टाउन। इस नाटक के पश्चात सभी लोग तितर बितर हो जाएंगे और मैं ये सोच रहा हूँ इस प्रकार नाटक की गहन आलोचना होगी। परंतु कृपया इस नाटक को असफल मानने से पूर्व ये विचार कर लें कि आप सबको प्रश्न करना कितना कठिन होता है। कुछ आलोचक ऐसे दुर्भावनापूर्ण होते हैं कि वे प्रश्न न होने के लिए दृढ़ संकल्प हैं और निश्चित ही इस नाटककार में विलक्षण प्रतिभा होनी चाहिए जो इस शिक्षा के विरुद्ध लोगों को प्रश्न करता है। अतः निश्चित ही सभी घटिया कवि हमारे शत्रु हम अच्छी प्रकार जानते हैं कि इस प्रकार शहर में उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। मैंने उन्हें स्टेज के समक्ष बहुत बड़ी संख्या में देखा है, यद्यपि वे किसी भी प्रकार से नाटक का निर्णय करने में सक्षम नहीं है क्योंकि उनकी साहित्य प्रतिभा नहीं है और नाटक का सफल हो गए हैं तो अपनी अयोग्यता से स्वयं ही इन्होंने नाटकों की आलोचना के कार्य में स्थापित कर लिया है। दूसरे वे हैं जो ईर्ष्या और दुर्भावना के कारण ये देखते हैं कि पात्रों के द्वारा किन लोगों को प्रतिबिंबित किया गया है। Let those who want to marry in future be warned by this example. Fainall and Mrs. Fainall so the mutual falsehood may not pollute the sanctity of the marriage bed. If the husband is unfaithful to his wife, the wife will also be unfaithful to him. And if the wife is unfaithful, her husband will be unfaithful too in marriage. Faithlessness gives rise to faithlessness. इसमें लास्ट में यही बताया गया है कि विवाह करने वाले लोग भविष्य में सावधान हो। यदि पत्नी या पत्नी की बेवफाई कष्ट उत्पन्न करती है तो दोनों धोखेबाजों को ये पता लगना चाहिए कि विवाह दोनों को ही कष्ट देता है।